Good evening all of you. सगळ्यांना आवाज येतोय का माझा? सगळ्यांना जर आवाज येत असेल तर आजचा लेक्चर आपण स्टार्ट करूया. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण एंडोजेनिक प्रोसेसेस डिस्कस केल्या होत्या, बरोबर आहे? अजूनपर्यंत मला असं वाटतं कोणी जॉईन केलेलं नाहीये लेक्चर. मी वाट बघतोय की जॉईन करतील सगळेजण. जॉईन केल्यानंतर आजचा जो लेक्चरचा पार्ट आहे तो आपण विचारात घेऊया. गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. आवाज येतोय सगळ्यांना? गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. आय थिंक कोणी जॉईन केलेलं नाही आहे क्लास. आज घ्यायचं आहे का नाही? नो वन हॅज जॉईन द क्लास टिल नाव. आय एम वेटिंग फॉर व्ह्युअर्स टू जॉईन इन. आय एम नॉट एबल टू सी एनी व्ह्युअर टू दिस क्लास. सो शॅल आय कंटिन्यू विथ द क्लास और शॅल आय कन्क्लूड? आज कोणी नाही आहे का लेक्चरला? Good evening all of you. If you are able to hear me, please comment in the live chat section. If no viewers joins in the coming 5 minutes, I will conclude class here. I won't conduct lecture today. I don't see anyone joining the class. I will wait for another 2 to 5 minutes. Okay, Smita, you have joined the class now. Anyone else? Okay, let's start. In the yesterday's lecture, we completed the concept of earthquake and volcanism. In volcanism, I have given you the detailed classification of
volcanoes and eruptions. Volcanoes and eruptions. Volcanoes and volcanic eruptions. I have given you this detailed classification to you. Okay. Now today we are going to discuss. Landforms built by volcanic eruptions. आपल्याला काय बघायचे आहेत? लँडफॉर्म स्टडी करायचे आहेत. As you all know, landforms built by volcanic eruption, they are divided into two parts. First is extrusive landforms and intrusive landforms. There are two kinds of landforms, extrusive landforms and intrusive landforms. These are two types of landforms. As you know, extrusive landforms are those landforms which are formed because of solidification of lava. Whenever molten rocks are exposed to the atmosphere, when they cool down in the presence of air, what we get is extrusive landforms. Then we have intrusive landforms. Whenever magma solidifies, whenever molten rocks they solidify below surface of the earth, they are called as intrusive landforms. Okay, so these are two different types of landforms that are associated with the volcanic eruption. Now let us enlist first extrusive landforms. एक्सट्रुसिव्ह लँडफॉर्म्सची उदाहरणं आपण बघूया. एक्सट्रुसिव्ह लँडफॉर्मचं पहिलं उदाहरण ते म्हणजे अतिशय महत्वाचा हा लँडफॉर्म असणार आहे. एक्सट्रुसिव्ह लँडफॉर्म मध्ये आहे व्होल्कॅनिक माउंट. काय आहे? व्होल्कॅनिक माउंट. दुसरा एक्सट्रुसिव्ह लँडफॉर्म आहे फ्लड basalt plateau. Okay, flood basalt plateau. This is the second landform that is associated with the volcanic eruption and it is an extrusive landform. Then come to intrusive landforms. अजून एक आहे volcanic islands. हा देखील एक एक्सट्रुसिव्ह लँडफॉर्म आहे. त्यानंतर घेऊया आपण इंट्रुसिव्ह लँडफॉर्म मध्ये सगळ्यात मोठा आणि सगळ्यात ज्याला आपण म्हणू शकतो इंटरेस्टिंग इज बाथोलिथ. देन वी हॅव लॅकोलिथ्स. देन वी हॅव डाइक्स आणि त्यानंतर आहे सिल्स. These are volcanic landforms associated with intrusion. So they are intrusive volcanic landforms. Now you tell me what do you mean by batholith? Who is going to tell me the answer of batholith? What do you understand by the term batholith? What do you mean by batholith? I am waiting for your answer. I am wanting you to answer this question. That is, what do you mean by batholith? Then second, what do you mean by laccolith? What do you mean by dikes? What do you mean by sills? Please answer these questions in live chat section. I have already discussed these concepts in the class.
batholith, laccolith, dikes and sills. Batholith, dome-shaped single huge rock of few kilometers inside Earth's surface. Okay, Vinita has answered the concept of batholith. Anyone else? Anyone else wants to answer any of the concept? Okay, let me answer for you, because no one is interested to answer this concept. Okay, now batholith, yes, it is a dome shaped rock which has formed because of solidification of magma chamber. It is a huge rock having huge geographical expansion. I had given you an example of Kailash temple. Kailash temple is built in a single rock. Kailash temple is located in Ellora caves, and such a huge rock structure is generally called as batholith. Then a smaller in size and saucer shape, just like a saucer, this is called as laccolith. Then a pillar like structure is called as dikes. Dikes are nothing but solidified vents. Whenever a vent of volcano solidifies, it takes a shape of pillar. And then we have sills. It is a horizontal plate shaped rock formed because of spread of magma. Okay, it has formed because of spread of magma, and that is called as sills. Okay, so these are some of the intrusive landforms associated with volcanic eruptions. Okay, now next important concept that we are going to study is exogenic processes. Exogenic processes. Okay, now as you know, exogenic processes, the first and foremost important thing is we need to understand their definitions. Exogenic processes are very unique concept. Exogenic processes, they are also called as destructive processes. Exogenic processes are also called as destructive processes. They are also called as planation processes. They are also called as aggradational processes. So these are some of the names for exogenic processes. As you all know, exogenic processes are divided into three types. First is weathering, second is erosion, and third is mass movements. Weathering is divided into three parts. First is mechanical weathering, second is chemical weathering, and fourth is biological weathering. Okay, then erosion is of four different types by the name of agent of erosion. First is glacial erosion, second is
fluvial or water erosion. Then we have wind erosion, and finally we have wave erosion. माफ मुवमेंटचे देखील 3 प्रकार आहेत. पहिला प्रकार आहे क्रीप, दुसरा प्रकार आहे फ्लो आणि तिसरा प्रकार आहे स्लाइड. ओके, so these are some of the important points in exogenic processes. Now who is going to tell me difference between weathering and erosion? Tell me difference between weathering and erosion. What is the exact difference between weathering and erosion? चला सांगा, वेदरिंग आणि इरोजन मध्ये नेमका काय डिफरन्स आहे? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन वेदरिंग अँड इरोजन? आय एम आस्किंग यू सम क्वेश्चन्स and I expect you to answer. What do you understand by the term weathering and what do you understand by the term erosion? You to answer. What do you understand by the term weathering and what do you understand by the term weathering is action of element of weather and climate over the material. I think Smita has answered this. Erosion is XC2. Vinita has answered erosion is XC2 disintegration of rocks. बेटा डेफिनेशन तरी करेक्ट द्या. डेफिनेशन मी व्यवस्थित दिलेले आहे. स्मिता डेफिनेशन 100% चुकली आहे. Weathering is action of elements of weather and climate over the earth material. Yes, it is true, but what it is? How you define weathering? Weathering is in situ disintegration of rocks on account of climate, on account of weather of earth, various characteristics of weather. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेदरिंग. वेदरिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दैट इज इन situ disintegration of rocks. इसको बोला जाता है in situ disintegration of rocks. If you don't use these words, there is no definition of weathering. So it is not a correct definition. Erosion की definition विनीता ने सही दी है. Ex situ disintegration of rocks is called as erosion. And when I say ex situ disintegration, I expect 3 processes taking place simultaneously. First is eroding. Second is transportation, and fourth is deposition. Erosion, transportation and deposition, these are 3 important processes which are simultaneously taking place under the broad heading of erosion. Now let us have the points of distinction between weathering and erosion. First, it is definition. First point is always going to be definition, and as I already given you definition. Now second point, forces. चला सांगा, weathering साठी कुठले forces आहेत आणि erosion साठी कुठले forces आहेत? Weathering साठी forces आहेत.
एक आहे मेकॅनिकल फोर्स, दुसरा आहे केमिकल फोर्स आणि तिसरा आहे बायोलॉजिकल फोर्स. मेकॅनिकल, केमिकल आणि बायोलॉजिकल हे कशाचे फोर्सेस आहेत, तर विदरिंगचे फोर्सेस आहेत. त्यानंतर जर आपण इरोजनचा अभ्यास केला, इरोजन मध्ये केवळ एकच फोर्स आहे, एकच एनर्जी काम करते आणि तिचं नाव आहे कायनेटिक एनर्जी. The energy produced by kinetic energy is responsible for producing the effect of erosion, and that's why on account of kinetic energy there are all three processes taking place simultaneously. What are those three processes? First is eroding, second is transportation, and third is deposition. Okay, so these are some of the important elements in terms of erosion. और वेदरिंग के बारे में तो पहले ही बता चुका हूं. वेदरिंग इज ऑफ 3 different types and there are 3 different forces responsible for weathering. Okay, so these are some of the points of differentiation. और कुछ additional points of differentiation है तो आप बताइए. What are some additional points of differentiation in weathering and erosion? वेदरिंग और इरोजन में और एडिशनल कौन कौन से पॉइंट्स है जो हम पढ़ सकते हैं? What are points of differentiation in weathering and erosion apart from the points that I have listed? Please comment in the section of live chat. कोई अदर डिफरेंस नहीं है? चलो नहीं है तो आगे चलते. आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आगे चलते. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है उसका नाम है मास मूवमेंट. मास मूवमेंट में जो फोर्स आता है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स. रिमेंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मास मूवमेंट्स. ठीक है, मास मूवमेंट के बारे में मैंने बोला है मैं इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा. अभी मैं मास मूवमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा. इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें एवलांच, मड क्रीप, डेब्री क्रीप, मड फ्लो, डेब्री फ्लो और लैंडस्लाइड, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है. लेकिन इसको हम नेचुरल हैजार्ड जो सेक्शन होता है इंडियन ज्योग्राफी का, नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल हजार्ड्स इन इंडिया, वो सेक्शन में हम जनरली क्या करेंगे? मास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट एंड द फाइनल कंसेप्ट. और जो मैंने आज आपको कमिट किया हुआ है, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जियोलॉजिकल टाइम स्केल. सबसे जरूरी पॉइंट है जो आप सबको पढ़ना जरूरी है. हमें पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. If we know about geological time scale, then we are able to understand many of the geographical processes that are taking place in geomorphology, that are taking place in climatology, that are taking place in hydrology. So हमें आगे चल के जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके लिए हमें ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है. Now first of all, let me tell you what do you mean by geological time scale. Now today, if you want to measure time, you go for calendars. Okay, you go for calendars. Calendars, what they have? They have millennia. Millennia months, 1000 years. Then we have centuries. Then we have decades. Then we have years. Then we have months. Then we have weeks. Then we have days. Then hours, then minutes, and then seconds.
This is how we measure time, and this is the hierarchy of measurement. In calendar, what we are measuring time. We are pointing out certain events according to various years, and this is how we maintain a timeline. To better understand chronology of events, हमें क्या यहाँ पे establish करना जरूरी है? Chronology मतलब कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप था, ये एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इसके लिए हम जो यूज करते हैं उसको मराठी में बोला जाता है दिनदर्शिका, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं कैलेंडर. सो कैलेंडर डिवाइड्स योर टाइम इनटू दीज मेनी हायरार्कीज. Now let's take an example of Earth. Earth is also an object, and if you want to really study the time of Earth, आपको अर्थ के टाइम के बारे में पढ़ना है, then you need to divide the time of Earth into multiple sections. It has to be in the hierarchical form. जैसे हमने ये कैलेंडर में मिलेनिया, सेंचुरी, ये ऐसे हायरार्की बनाई हुई है समझने के लिए, वैसे ही अर्थ का जो एज है आज का वो रफली अराउंड 3.6 बिलियन ईयर्स का है. सो टू स्टडी दैट ह्यूज पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू डिवाइड अर्थ, or we need to divide that time into different segments, into different hierarchies, and that is precisely called as geological time scale. Geological time scale is responsible for producing a division of time, a chronology of events that have taken place on the surface of the earth since the birth of earth. Okay, so ये हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो इसकी मैं पहले हायरार्की बताऊंगा. So geological time scale, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की सबसे पहले हमें हायरार्की देखनी है. सबसे पहला हायरार्की का जो पार्ट है उसको कहा जाता है इयॉन्स. क्या बोला जाता है उसको? इयॉन्स. ठीक है, कौन कौन से इयॉन्स है हमारे यहां पे? हमारे यहां पे बहुत सारे इयॉन्स है. पहला है, उसका नाम था हैडियन इयॉन. ठीक है, उसमें उसके बाद में था फेनेरोजोइक इयॉन, और सबसे आखिरी में आया पैलियोजोइक इयॉन. ठीक है, अभी इयॉन के बाद में जो सेकंड डिवीजन रहेगा, वो सेकंड डिवीजन को हम बोलेंगे इरा. ओ सॉरी, यस, इरा. देयर आर डिफरेंट डिस्टिंक्शंस. अभी सिर्फ हम पैलियोजोइक का, ओ सॉरी, पैलियोजोइक पहले आएगा, उसके बाद में फेनेरोजोइक आएगा. ठीक है, फेनेरोजोइक के हम 3 करते हैं, उसके बाद में आएगा इरा, और सबसे आखिरी में आएगा पीरियड, उसके बाद में आएगा इपॉक. मैं काम करता हूं, नाम बाद में देता हूं, सबसे पहले आपको डिवीजन दूंगा. जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम पढ़ रहे हैं. जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अगर हायरार्की हमें पढ़नी है तो देखिए कैसे है. पहला रहता है इयॉन्स. इनका जनरली टाइमलाइन फिक्स नहीं है. जैसे हमने देखा मिलेनिया मतलब 1000 ईयर्स, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, वैसे यहां पे टाइमलाइन फिक्स नहीं है. यहां पे टाइमलाइन इवेंट्स के अकॉर्डिंग फिक्स की गई है. द मेजर इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द लाइफ ऑफ अर्थ. सो फर्स्ट इज ऑलवेज एन इयॉन व्हिच इज अ ह्यूज टाइम. देन इयॉन्स आर डिवाइडेड इनटू इरा. ओके, then era is divided into period, and then periods are divided into epochs. ठीक है, so first is eon. eon की examples मैं बता देता हूं. Hadean eon, त्यानंतर आहे तो म्हणजे Hadean eon, प्रोटेरोझोइक eon और फेनेरोजोइक इयॉन. फिर उसके बाद में आएंगे इरा. यहां पे है मेसोजोइक. फिर उसके बाद में
बहुत सारे ऐसे इराज आते हैं। फिर उसके बाद में आता है पीरियड। पीरियड में रहेगा यहां पे सेल्यूरियन, उसके बाद में है जुरैसिक, उसके बाद में है ट्रायासिक, ऐसे बहुत सारे। यहां पे है क्वाटरनरी, टर्शरी, और इपॉक्स के एग्जाम्पल हैं ओलिगोसीन, मायोसीन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ सकते हैं इपॉक्स में। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो हमारे पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। कौन से टाइम में क्या हुआ है, इसके आधार के ऊपर हम क्या करेंगे, तो पृथ्वी का जो भी स्ट्रक्चर है या फिर हिस्ट्री जो है वो हम स्टडी करेंगे। सो दिस इज व्हाट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज। अभी सबसे आखिरी में मैं आ रहा हूं हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, और उसका नाम है रॉक एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक्स की डेफिनेशन पहले ही मैंने दी है। इट इज अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, सॉलिड मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, जिसको बोला जाता है रॉक्स। नाउ रॉक्स आर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स। फर्स्ट इज igneous rocks, then we have sedimentary rocks, और सबसे आखिरी में है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, रॉक्स के इतने सारे प्रकार पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक्स के 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक का नाम है एक्सट्रूसिव रॉक्स और दूसरे का नाम है इंट्रूसिव रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स के 3 एग्जाम्पल्स है, मैकेनिकल सेडिमेंटरी, ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी और केमिकल सेडिमेंटरी। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के 2 प्रकार हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक और रीजनल मेटामॉर्फिक। ओके, सो मला असं वाटतं की जिओमॉर्फॉलॉजीचा जो सेक्शन आहे तो या सगळ्या अभ्यासावरून आपल्याला लक्षात येऊ शकतो। मी क्विक रिव्हिजन घेतली आहे आतापर्यंत जे मी स्टडी केलं होतं किंवा आतापर्यंत जे आपण अभ्यासलं होतं त्याची। याच्यामध्ये जर कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा। याच्यामध्ये कुठला सेक्शन जर तुम्हाला वाटत असेल की मी परत एकदा सांगावा तर तो परत एकदा सांगा, म्हणजे मला जिओमॉर्फॉलॉजी डिक्लेअर करता येईल, मग आपण परत एकदा क्लायमेटॉलॉजीच्या अभ्यासाकडे जाऊ शकतो। सो इफ यू हॅव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स regarding the revision we conducted for geomorphology, then we can go towards atmosphere or climatology. If you have any doubt, please ask those doubts in comment section. ओके, विनीता का क्वेश्चन है इयॉन मीन्स इरा। इरा मीन्स बेटा दिस इज जस्ट अ नोमेनक्लेचर फॉर डिवाइडिंग। देखो व्हाट डू मीन बाय मिलेनिया, ये एक डिवीजन है ना। फॉर एग्जांपल 1000 ईयर के जो डिविजन्स है उसको हम मिलेनिया बोलते हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अर्थ का जो 3.6 बिलियन ईयर्स का जो एज है, ये 3.6 बिलियन एज को हम 4 इयॉन्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने इयॉन्स में डिवाइड कर रहे हैं?
4 इॉन्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से 4 इॉन्स है? हैडियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग द जियोलॉजिकल टाइम स्केल अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशंस। मैं फिर से बताता हूं, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर हमें पढ़ना है, एक इमेज में लेता हूं, जो इमेज से आपको पता चल जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। It has to be a complete one. Yes, now let me give you an example of what we are discussing here. मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बता रहा हूं, and to understand geological time scale you need an image. ठीक है, now we have an image of geological time scale. ठीक है, ये जो आपके सामने जो इमेज है अभी सबको दिख रही है? Is everyone is able to see that what I am getting you? This is geological time scale. अगर आप सब देख रहे हो तो मुझे बताओ, अगर आप देख सकते हो, देख पा रहे हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल सब तो दिख रही है क्या? दिख रहा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल? अरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिसते का? यस और नो? आर यू एबल टू व्यू द इमेज दैट आई हैव डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन? ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इमेज इन डिटेल. Just like we divide the time into multiple fragments, here we are dividing time into multiple fragments into hierarchies. Now, सबसे पहली जो हायरार्की है दिख रही है यहां पे ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, इट इज कॉल्ड एज इयन. सो 3.6 billion years is the age of earth, and we divide that age into 4 important eons. What are they? Hadean, Archean, Proterozoic and Phanerozoic. They are called as eons. Eons means 4 broad divisions of the entire age of earth. ठीक है, अभी ये जो eons है इनको हमें सब डिवाइड करना है, क्योंकि एक इयॉन 1 बिलियन या 2 बिलियन साल का रहेगा. तो अगर मुझे इयॉन को स्टडी करना है तो उसको मुझे और सब डिवीजन में डालना पड़ेगा. तो उसका नेक्स्ट डिवीजन क्या रहेगा? ईरा. अभी पहले जो 3 इयॉन्स हैं इनके इराज हम डिस्कस नहीं करते, इनका सब डिवीजन हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. वो सिर्फ साइंटिफिक स्टडीज में यूज किया जाता है, लेकिन हमारे पर्पस के लिए इतना सफिशिएंट है. तो फेनेरोजोइक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इयॉन है, जो सबसे रिसेंट इयॉन है, उसको हम 3 इराज में डिवाइड करते हैं. पहला है पैलियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक, तीसरा है केनोजोइक. ठीक है, अभी ये एक एक जो इरा है उसको हम एक एक पीरियड में डिवाइड करेंगे. उसको हम क्या करेंगे? एक एक पीरियड में डिवाइड करेंगे. जैसे यहां पे आप देख सकते हो, पैलियोजोइक इरा जो है उसको हमने कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनियम, कार्बोनिफेरस, पर्मियन इसमें डिवाइड किया है. फिर उसके बाद में हमने मेसोजोइक को
ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में डिवाइड किया है, और फिर हमने केनोजोइक को टर्शरी और क्वाटरनरी में डिवाइड किया है. सो दिस इज लाइक मिलेनिया. इयॉन मींस क्या है? मिलेनिया. अभी मिलेनिया को आप किस में डिवाइड करते हो? सेंचुरीज में डिवाइड करते हो. तो ईरा मतलब है सेंचुरी. अभी सेंचुरीज को आप किस में डिवाइड करते हो? पीरियड्स में डिवाइड करते हो. तो इसको बोलेंगे हम पीरियड्स. और पीरियड्स के बाद में आता है, एक एक पीरियड का हम डिवीजन कर सकते हैं, इसको बोला जाएगा इपॉक. यहां पे ये डायग्राम में वो दिया नहीं है, लेकिन मैं और एडिशनल चीजें बता रहा हूं. वी कैन डिवाइड वन इंडिविजुअल पीरियड इनटू इपॉक्स. और इपॉक्स के मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूं. क्वाटरनरी इपॉक में दो सबसे इंपॉर्टेंट इपॉक्स है. क्वाटरनरी पीरियड में दो इंपॉर्टेंट इपॉक्स है. एक का नाम है प्लिस्टोसीन, और अभी जिसमें हम रह रहे हैं उसका नाम है होलोसीन. वी आर लिविंग इन होलोसीन इपॉक. सो दिस इज हाउ वी स्टडी द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. अभी जो भी सुन रहा है उसको समझ में, विनीता आपको समझ में आ गया? आई थिंक यू आर द ओनली वन हु इज लिसनिंग टू दिस लेक्चर. And if you have understood geological time scale, I will conclude my lecture today. And if you haven't understood, I'll tell you again. So tell me whether you have understood or not. ओके, अगर समझ में आया है विनीता, सो आई विल स्टॉप एट दिस लेक्चर. टुमारो विल स्टार्ट रिवाइजिंग क्लाइमेटोलॉजी and will also continue with the climatology section. Okay, so thank you very much.